व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शमला और आप देख रहे हैं शिमीज किचन। आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ सुपर डिलीशियस चिकन वरुवल। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाते रहोगे और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। First I'm going to add 1 kg chicken in a bowl. Goes in 1 teaspoon salt, half teaspoon turmeric powder, half teaspoon red chilli powder. Mix well and set this aside. Next I'm going to add 4 to 5 green cardamoms in a pan, 8 cloves, 1 mace, 1 inch cinnamon, 2 tablespoon coriander seeds, 2 tablespoon cumin seeds, 1 bay leaf, 8 dry red chillies. Dry roast for few seconds. And now transfer this in a blender and bring it to room temperature. एकदम ठंडा होने के बाद स्पाइसेस को ब्लेंड करें। गरम स्पाइसेस को ब्लेंड करने से इसका रंग उड़ जाता है। Next crush 12 garlic pods and 2-inch ginger and set this aside. And now heat 4 tablespoon oil in a pan. Goes in 2 sliced onions. Saute till it becomes golden brown. Add crushed garlic and ginger. Now fry this for at least 5 minutes in a slow flame. And to this I am adding marinated chicken. Give this a very nice mix and cook this for 5 minutes in a slow flame. Then add 4 green chillies and handful of curry leaves. Mix well. And now close the lid and slow cook for 5 minutes. To this I am adding half of the blended masala. Mix well and cook for 2 minutes. Add half teaspoon salt if required. Adjust as per your taste. Again I am adding the remaining masala. Give this a very nice mix. Add 1 tablespoon lemon juice. Add 1 cup water. And now cook this chicken in a slow flame till water absorbs. Goes in some finely freshly chopped coriander leaves. Mix well. Now close the lid. Again cook for 2 minutes in a slow flame. Once done, switch off the flame and the super delicious chicken varuval is ready to serve. Goes well with plain rice or ghee rice. Garnish this chicken with some lemon wedges, onions and cucumber. तो गाइस, ये थी सुपर डिलीशियस चिकन वरुवल। आई नो कि आप सब ये ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि ये दिखने में भी ज़बरदस्त है और जब आप ये बना के खाओगे तो एकदम डिलीशियस रहेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर दोनों करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाने से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। सी यू सून विथ मोर अमेजिंग रेसिपीज़। Thank you for watching. Take care, stay safe, stay healthy and have a nice day.